Good morning. All my dear students, standard 8, chapter 8, binomial distribution. Binomial distribution will be the a plus b power n. Now general term on the tr plus 1 ncr e power n minus 1 n minus r b power r. Standard values. Subject math. Solution exercise 8.2. Exercise 8.2. Question number first. Find the coefficient of x plus 3 power 8. Find कोफिशिएंट. इसका कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट x पावर 5. यू फैक्टर x plus 3 पावर 8 टोटल नंबर आपका 9. इससे अच्छा है कि आप फार्मूला यूज करो. हियर a इक्वल टू x, b इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8. नाउ जनरल फार्मूला tr plus 1 ncr a power n minus r b power r. t r plus 1 n means 8 c r, a means x power 8 minus r, b power b means 3 power 8. Formula magnitude value a b and n. Coefficient of x power 5, where variable is only one x. 3 power 8 is a constant, 8 cr is a constant. Coefficient of x power 5, coefficient of x power 5 is, ये जो 8 माइनस r है इसके इक्वल होना चाहिए 5 के. माइनस r इक्वल टू 5 minus 8, where r equal to 3. If r equal to 3, then x power 5. Now formula t 3 plus 1 8c3 x power 8 minus 5 3 power 8 factorial 8 factorial 3 factorial 5 3 power 8 x power 5. इसको सॉल्व कर दो तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 मिल जाएगा. 8 into 7 into 6 5 कैंसल, 3 into 2 3 power 8 x power 5. 2 3 जा 3 कैंसल, 8 7 जा 56 into 3 power 8 x power 5. This is the coefficient of x power 5. E value x, b value 3, r value, n value 8, tr plus 1, ncr e power n minus 1 br. n is equal to 8. 8 cr x power 8 minus r 3 power 8. 3 power 8 value 9 into 9 into 9 into 9. 243 81 into 81. कहीं कुछ गलत हो रहा है देख लो. 8 minus r equal to 3 8c3 x power 5. ओके बेटा मैंने गलत लिखा. b power r here 3 power 3. फार्मूले में वैल्यू गलत करके गई इसलिए आंसर बन रहा है
3 power 3 means 27 factorial 8 factorial 3 factorial 5 x power 5. 27 8 7 6 3 into 2 3 9 का 2 4 का 9 4 का 36 multiply 36 so 56 multiply 36 कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हुआ है। आज की वैल्यू 3 टी आर प्लस 1 3 प्लस 1 8 c3 x पावर 5 3 पावर 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 3 पावर 3 x पावर 5 means 8 into 7 into 6 multiply by 5 cancel 3 into 2 27 x power 5 means 3 2 the 6 56 multiply by 27 x power 5 56 multiply by 27 39 2 1 5 1512 is coefficient of x power 5. Okay. कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा। कैलकुलेशन आप अच्छे से करें, गलती हो सकती है। सिमिलरली सेकेंड a minus 2b सब में एक ही फार्मूला यूज करना है 12 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a power 5 b power 3 now here a equal to a b equal to minus 2b n equal to 12 now p r plus 1 n c r e power n minus r b power r n means 12c r r means find out a 12 minus r b minus 2b power r here a is a power of 5 अब a की पावर 5 आनी चाहिए तो क्या होगा means if power of a is 5 then 12 minus r equal to 5 12 minus 5 equal to r where r equal to 7 where r equal to 7 t r का की वैल्यू फाइंड आउट हो गई t 7 plus 1 12 c 7 की वैल्यू 12 minus 7 minus 2b power 7 coefficient minus 2 power 7 12c 7 a power 5 b power 7 find value this is the coefficient of a power 5 and b power 7 minus 2 power 7 equal to minus 128 6 place 64 minus 128 factorial 12 factorial 7 12 7 cancel factorial 5 a power 5 b power 7 minus 128 12 into 11 into 10 into 9 into 8 7 are cancel 5 into 4 into 3 into 2 e power 5 b power 7
5 2 का 10 cancel, 4 3 का 12 cancel, here minus 128, 11 9 का 99 multiply by 8 plus 1 and 3, a power 7 b power 5 b power. Calculate the value, then the coefficient of a power 5 and b power 7. Multiply after this. इस तरह से हम कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसकी पावर यस कोफिशिएंट मींस यस की पावर इक्वल टू 5 या 7. जनरल टर्म, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द जनरल टर्म x square minus y power 6. जनरल टर्म हियर a equal to x square, b equal to minus y and n equal to 6. P r plus 1 जनरल टर्म, n c r e power n minus r g power r. Then this is defined जनरल टर्म 6 c r x square 6 minus r b minus y power r means minus 1 power r बाहर ले लो 6 cr x power 12 minus 2r y power r. This is general. Similarly, find the question number 4. Question number 5. Find fourth term. Fourth term. Fourth term means t 3 plus 1. Question x minus 2y power 12. Here tr plus 1 12 c3 x power 12 minus 3 9 minus 2y power 3. A in place of x, b in place of minus 2y, n in place of 3, fourth term 3 plus 1, r in place of 3. 12 c3 minus 2 power 3, x power 9, y power 3. Value solve कर लो, that is find the fourth term. 9 is 8, factorial 12, factorial 3, factorial 9, x power 9, y cube. Minus 8, 12 into 11 into 10, 9 cancel, 3 into 2, x power 9, y cube. 3 4 ja, 3 2 ja. Minus 8, 10 2 ja 20, 110, 220, x power 9, y cube. 0, minus 7160, x power 9, y power 3. Now the fourth term. Answer check करो. हाँ 170, x power 9, y power 6. Similarly, question number 6, you solve 13 term, e value 9x, b value minus 1 upon 3 root x, n value 18, r value 12. मिडल टर्म मैंने आपको बता दिया था, सॉल्व कर दिया था. With n is equal to r, total number of term given, next 7 and 8, 4th और 5th, t4 and t5 find out. Question number 10. It is most important. Coefficient of r minus 1, nth ratio and rth ratio and r plus 1 nth. Term spans
1 प्लस x पावर n फंक्शन क्या दिया है 1 प्लस x पावर n इन रेशियो, इनका जो रेशियो है इक्वल टू 1:3:5 फाइंड दिया है r means 1 plus x power n find value p rf means p r plus 1 n c r rf means n c r a means 1 power r x means t r -1 पावर n माइनस r x पावर r फार्मूला लिखो p r plus 1 n c r x पावर या p पावर n minus r b पावर r. Here a is 1 power n minus r will be equal to 1. This is a r x term. ये कैसा आएगा r x term t r minus 1 plus 1 n x term n c r minus 1 divided by 1 x power r minus 1. Similarly find t r plus 1 plus 1 n c r plus 1 x power r plus 1. r minus 1 n x means r minus 1 n x. r n x means x power r. r plus 1 n x x power r plus 1. This coefficient is equal to 1:3:5 means t r minus 1 करने हैं n c r minus 1 ratio n c r ratio n c r plus 1 is equal to 1:3:5. 1 plus x power n से हमने p r plus 1 r x term ले लिया r minus 1 coefficient and r plus 1 coefficient. अब बताइए रेशियो मीन्स डिवाइड NC r minus 1 upon NC r equal to 1/3. सेकेंड क्या है NC r upon NC r plus 1 equal to 3/5. A divided by B means 1/3. B divided by C means 3/5. Use the formula factorial n r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial upon factorial n factorial r n minus r factorial equal to 1/3. ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा फैक्टोरियल r n minus r factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial equal to 1/3. r and r minus 1 r into then r minus 1 n minus r plus 1 then n minus r plus 1 into n minus r factorial. जैसे हम इसके पहले मेजर करते हैं r minus 1 factorial n minus r factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 n minus r cancel 1/3 cancel cross multiplication 3r equal to n minus r plus 1. इसको इधर देखो चलेगा n minus 4r cross multiplication 4r equal to n plus 1. फर्स्ट रिलेशन आ गया, अभी सॉल्व कर देते हैं।
Second, NCR plus 1 equal to 3 by 5. Factorial n, factorial r, n minus r factorial, factorial n, r plus 1 factorial, n minus r minus 1 factorial. Okay, equal to 3 by 5. Factorial cancel. R plus 1 denominator to numerator, n minus r minus 1 factorial, then factorial r, n minus r, 3 by 5. R will be more than r plus 1 factorial r, n minus r minus 1 factorial, factorial r, n minus r, n minus r minus 1 factorial. सबको डाउन किया है, बिगेस्ट वैल्यू को डाउन, r plus 1 को r factorial आ गया, n minus r factorial, n minus r minus 1, this cancel, r cancel. R plus 1 upon n minus r equal to 3 by 5, 3n minus 3r, 5r plus 5, where n equal to 4r minus 1, n की जगह पे 4r minus 1 minus 3r minus 5r equal to 5, 4 की जगह 12r minus 3 minus 8r equal to 5, 4r equal to 8, r equal to 2. If r equal to 2, then n equal to 4 की जगह 4 to 8 minus 1, n equal to 6. इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करें. n equal to 7, r equal to 3. Next, r equal to 2, n equal to 7. 3 आंसर गलत है. Find the positive value of n for which coefficient x square in the expense 1 plus x power n is equal. Means 1 plus x power n means x square coefficient is equal to 6. Given, find the value n. P r plus 1 n c r 1 power n minus r x power r. P r plus 1 n c r x power r, where r equal to x square coefficient means x square coefficient each means r equal to 3. MC3 no 2 MC2 coefficient equal to 6. इसको सॉल्व करो. फैक्टोरियल m फैक्टोरियल 2 n minus 2 फैक्टोरियल equal to 6. n minus 1 and n minus 2 cancel. 6 to the 12. n square minus 2n minus 12 equal to 0. m square minus 6n minus 9. 4 3 get 12. Minus m minus 2. m square minus 4m plus 3m minus 12 equal to 0. Where n common n minus 4 plus 3 common
m माइनस 4 इक्वल टू 0। m वैल्यू एक पूरा आएगी, एक माइनस 3 आएगी, माइनस 3 नहीं कंसीडर करेंगे, m इक्वल टू 4। एक्सरसाइज में बी कंप्लीट मिसलेनियस, देन यू सॉल्व मिसलेनियस आप सॉल्व करो।